जब से मैंने अपना सोलोप्रेन्योर वाला जर्नी शुरू किया, एक चीज तो लाइफ में बहुत रेगुलर हो चुका था, विच इज फीलिंग लॉस्ट एंड पावरलेस। खुद को बिलीव करवाना कि यस आई कैन डू इट यूज्ड टू बी रियली टफ। और ऐसे एक फेज से वापस आना भी बहुत मुश्किल होता था, बिकॉज वेन एवर आई एम ट्राइंग टू गेट बैक, सारी चीजें मुझे फिर से हिट करने लगता था एंड आई फाउंड माई सेल्फ अनगार्डेड अगेन। So I was looking for a system जिससे इस प्रोसेस को बहुत ही बेटर और एक माइंडफुल तरीके से हैंडल किया जा सके। So I gave journaling a shot. The first few days were not really great. बहुत दिन तो मैं भूल ही जाता था कि मुझे एंट्री करना था, और आधा दिन मन भी नहीं करता था। क्या फर्क पड़ता है यार? But with time, I stuck by this habit and it did become a cornerstone of my whole process. Not only it helped me ease out my stress, it also made me more productive. It gave a structure to my thoughts. I started believing in my journey even more, and somehow it made me more calm about what's happening around and focus on my own thing. So इस वीडियो पे मैं मेरा प्रोडक्टिविटी या मेंटल क्लैरिटी वाला जो जर्नल है उसका तरीका दिखाने वाला हूं, एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो से आपको बहुत सारा आइडियाज या इंस्पिरेशन मिलेगा अपना जर्नलिंग जर्नी शुरू करने का। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू ग्रोन अप टेल्स। हेलो, माय नेम इज सत्यजीत बैनर्जी। लेट्स बिगिन दिस। तो मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल पे बहुत जर्नलिंग की स्टोरीज पोस्ट करता था, उनके बारे में बात करता था। तो मुझे अक्सर ऐसा क्वेश्चन मिलता था कि आप जर्नलिंग पे एक्चुअली लिखते क्या हो? क्या वो बचपन पे जो डियर डायरी वाला ऐसे लिखते थे वैसा कुछ? डियर डायरी, टुडे इज मंडे। आई woke up late and got late for the school bus. So somebody else sat with my crush. Let me tell you, it's not that. In fact, you just need like 5 minutes at the end of the day to follow this process, and that's good enough. So let's get into my simple and minimal journaling process for productivity and mental clarity. मैं बेसिकली इसको 4 लेवल पे डिवाइड करता हूँ। नंबर 1 ट्रैकिंग, नंबर 2 डेली बेसिस, नंबर 3 वीकली बेसिस एंड नंबर 4 मंथली बेसिस। द फर्स्ट लेवल इज ट्रैकिंग। मेरे लाइफ पे मुझे जो जो हैबिट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट लगते हैं, मैं सिंपली उसको ट्रैक करता हूँ या फिर मेजर करता हूँ। बेसिकली बिकॉज इट गिव्स मी अ फीडबैक इमीडिएटली। यू सी, अच्छे हैबिट्स का अच्छा रिजल्ट आपको इमीडिएट देखने को नहीं मिलता। नॉर्मली 3 महीने वर्कआउट के बाद यू कैन सी द रिजल्ट्स इन योर बॉडी। बरसों से सेल्फ हेल्प पढ़ने के बाद यू रियलाइज why it was worth it. But let me tell you a secret. हमारे ब्रेन को सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर्स ही पसंद है। तो जब भी मैं दिन का एक्सरसाइज खत्म करता हूँ या रील पोस्ट करता हूँ या बुक पढ़ लेता हूँ, आई पुट अ टिक इन माई जर्नल एंड इट गिव्स मी एन इंस्टेंट पॉजिटिव एनर्जी। और जब एक ऐसा टिक 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 का स्ट्रीक बन जाता है ना, तो उसको खराब करने का भी मन नहीं करता। सो मैं ऐसे महीने का नाम लिखता हूँ और मेरे कुछ हैबिट्स जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उनको लिखता हूँ, और एक कॉलम पे सारे डेट्स लिखता हूँ। देन हर दिन मैं इस पे टिक देता रहता हूँ। There is a rule called 2-day rule. इसके बारे में मैं पिछले वीडियोस पे भी बात कर चुका हूँ। इट्स बेसिकली कि हमें पता है कि जब भी हम कोई भी एक हैबिट बनाने का कोशिश करते हैं तो लाइफ कम्स इन बिटवीन, और जब भी कोई भी वो हैबिट 2-3 दिन के लिए हम नहीं कर पाते हैं कोई भी रीजन से, तो उसको फिर से स्टार्ट करना मुश्किल हो जाता है। दिस इज वाई 2-day रूल इज अ लाइफ सेवर, which basically says कि कोई भी हैबिट को बैक टू बैक 2 दिनों के लिए बंद मत करो। अगर एक दिन कोई भी रीजन से बंद हो भी जाए, मेक श्योर कि नेक्स्ट डे आप उसको चाहे 5 मिनट के लिए भी करो, वो चाहे रीडिंग हो या एक्सरसाइज। सो ये 2-day रूल ट्रैक करने पे भी ये जर्नल मुझे मदद करता है। इफ आई सी समथिंग आई डिड नॉट डू यस्टरडे, आई नो आई नीड टू डू इट टुडे। बेसिकली ऐसे ही मैं सक्सेसफुली रीडिंग, कंटेंट क्रिएशन या एक्सरसाइजिंग जैसे हैबिट्स पे कंसिस्टेंट बन पाया। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई ट्रैक माई स्लीप because I know कि this is an inherent part of my overall growth and progress. अगर आप कोई भी एक दिन पे सही समय सो पाओ, ठीक ठाक खाना खा पाओ और थोड़े फिजिकल एक्सरसाइज कर पाओ, तो 95% of your adult problems will get solved. और ये ट्रैक करते हुए ना, I did find a pattern between my sleeping habits and my productivity levels. जब भी sleep cycle irregular होता है, I fail to keep up with my basic stuff. So you see, in the first half of this month, the sleep is quite good. I'm sleeping at the same time and waking up around the same time. And so all the things, exercise, reading, IG post, study is happening on their flow. But then in the second half, the sleep becomes very irregular.
and my other things suffer as well. So ये ट्रैकर आपको अपने आप को पहचानने में भी मदद करता है, which is the toughest and most important job of the world. Moving on, level 2 is what I do on a daily basis at the end of the day before hitting the bed. मैं basically उस दिन का डेट लिखता हूँ and then I write down whatever I feel like, whatever I did right or wrong in the day. अगर कुछ अच्छा काम किया तो what helped me do that, अगर कुछ बुरा किया तो वो कैसे हुआ. This really gives me the opportunity to see myself from a different person's point of view, which we normally miss out on if we don't reflect. For example, मैं आज late उठा because I slept late, which does not go according to the person I want to be. और आज I tried the noise cancelling headphones and they really helped me, so I'm using them regularly from tomorrow. और आज productive नहीं हो पाया because I got so many calls, so from the next day I'm silencing the phone and turning it upside down, etc. And after this, I write 2 good things that happened to me or I did on that particular day. I call them my rainbows. You can call whatever you want, but the reason why you should do this is more important. Firstly, it gives me a subconscious happy ending of the day, which helps me sleep faster. It's even more important for the people who struggle with negative thinking. Yes, this small little exercise can actually mend your habit of negative thinking. Because let's face it, कि every day 2 अच्छा चीज जो आपके साथ हुआ या आपने किया, वो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है. Trust me, it does. So तब आप सर्च करते हो कि पूरे दिन में ऐसा कौन सा पॉजिटिव चीज हुआ. So you are actually digging out the positive thing from a otherwise normal usual day. So it gets registered in your subconscious, and with time you become a positive thinking wala person. Also कभी-कभी I settle with very regular, very small things as my rainbows. जैसे कि I had a good time at the gym, or maybe I met someone on time. This tells your subconscious yes, small things, little things can be great as well. Another perspective that you need for a good life. I am one of them who gets a lot of anxiety and all at night when I hit the bed. But this, I have to admit, has been a game changer. Level 3 is weekly basis journaling. My week ends on Sunday because I don't normally like to work on Sundays. So Monday is like a fresh start. So Sunday night before sleeping, I reflect upon what I did the whole week. क्या मेरे weekly goals या intentions के साथ मैंने justice किया? कौन सा चीज ignored रह गया? कौन सा चीज वो है जो मुझे next week पे एक priority बनाना है? Yeah, as simple as that. Then I set some goals or intentions for the next coming week. I make sure they are achievable and also challenging me to get 1% ahead of me. Let's move on to the level 4, which is monthly basis journaling. I do this on the last day of every month. Basically, this is the process of reflecting upon my progress and everything I did this month. सिर्फ ये मंथली रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस है उसके ऊपर मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो बनाया है. If you want, you can watch it here or maybe here. Anyway, then again, I just try to set some goals or intentions for the next month and I try my best to keep up with it. Again, while setting all these kind of goals, I always remember to not overburden myself. Keeping your goals achievable and minimal actually helps you out with momentum. मुझे लगता है कि हमेशा mindlessly तेज भागने का कोशिश करने से बेहतर है कि आप मोमेंटम को आपके बेनिफिट के लिए यूज करो, एक माइंडफुल वे पे आगे बढ़ो, बिकॉज दिस इज द लैंग्वेज आवर बॉडी अंडरस्टैंड्स, और जिसके लिए मेरा ये जर्नलिंग प्रोसेस आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा. सो स्टार्ट योर जर्नलिंग जर्नी. एक अच्छा जर्नल खरीदने का वेट मत करो, एक अच्छा दिन का वेट मत करो, या फिर कोई अच्छा एक टैक्टिक ढूंढने का वेट मत करो. जस्ट स्टार्ट टू पुट whatever is in your mind in a piece of paper, and that will give your thought structure. And I'm sure कुछ दिन करते करते you will find your sweet spot कि क्या चीज आपके लिए काम करता है, क्या चीज आपके लिए काम नहीं करता. फिलहाल I gotta go and I'll see you soon. Stumbling home, we don't know where we're going. Should've turned back hours ago.